Good evening everybody and welcome to another dose of English literature, and today we are going to discuss the 2023 Ssb Pgt English, which was held on 2023. So I hope now you'll start joining. Are you all sleeping? Anyway, so welcome to WIDYAKAR online classes, and we have completed unit 1, 2 and 3, 4 like the forms of literature, which you are pretty easy, you can do it by yourself. Then before jumping into unit 5, we have decided that to, as you all suggested, to work out the 2023 previous year questions. So basing on your request, we have decided to start with the fresh questions, the previous year's 2023 questions. Okay, I am waiting for all others to join. Let them join. Sonali Mudali, good evening. Pragya Mohanty, good evening, ma'am. Yes. My last class, I scolded you a lot, chided you all a lot, because you all are pretty young, you do not know. Young means you are all matured enough. I want that you should be right on your toes, पूरा well prepared है कि रहिबो. तो जो टाइम तमे वेस्ट करछ पढ़ला बेले, सेही टाइम टाको तुम मेकअप करियो एही समय रे. जदि पढ़िबनी तमे एंती जस्ट गोटे क्लास टे कल घंटा 2 घंटा मस्ती कल तापर अगेन घरे बस पढ़ला, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो इट्स अ टफ कंपटीशन भाबनी, बिकॉज जो क्वेश्चन आसीची एबे भी आगु को भी सेही आसीबो, बहुत गुडे कोटेशन आसीबो. अंडरस्टैंड? You know, since we are going to analyze the questions, so I am waiting for 5 to 10 to 11 students joining. Parsala pare we can do it, because Shakespeare पे तम समस्त को जो 5टा प्ले शेक्सपियर को अच्छी, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ए 5टा प्लस 12th नाइट, ए 6टा प्ले रो इम्पोर्टेंट जितक अच्छी डायलॉग्स, इम्पोर्टेंट डायलॉग्स गुड़ाक तुमको मन रखा पड़े, all the important dialogues, because Shakespearean play Elizabethan age रे mostly आसीबो play Shakespearean play आसीबो जो tragedy गुड़ाक 4टा जाक plus Antony and Cleopatra, एठु ही क्वेश्चन कोटेशंस आसुची. एसएसबी लेक्चरशिप रे लेक्चर ये पे पोस्ट पे आसीची, इवन पीजीटी भी आसीची. ओके, should we start now? The first question, choose the correct alternatives to answer the questions. Question number 1, tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day
to the last syllable of recorded time. These are the opening lines of the soliloquy of a Shakespearean tragic hero. Identify the hero. Option A, Hamlet, B, Othello, C, King Lear, D, Macbeth. So, this is a very, very common. Macbeth, undergraduate समस्त prescribed age. Macbeth. And Macbeth रे इतनी quotation दला बला quotable quotes अच्छी. गोटाला sweet are the uses of adversity. जोटा romantic comedy गोटे होची आरो Shakespearean करो. सेटा then Tempest, I would have like Tempest ko samaste padibo. No, it is Macbeth. No, it's not Hamlet. Vibhushita, it's not Hamlet. It's a very, very famous line quoted. It's a quote from dialogue from Macbeth. It's a soliloquy from Macbeth. Macbeth play ko mutane story kahivin tumko play ta kon hechi. Macbeth was a general of King Duncan of Scotland. He was at that point of time Thane of Cawdor. Then see jetebale asuchanti he meets three witches. The three witch mane semane good prediction korchanti. Then Macbeth, you will be the king. You will be killed by a person who is not born of a woman. Tamane kon se jo answer ta seita achi. Taku Macbeth tu last marichi kiye Macduff marichi. Macduff kon Macduff normal way re janma hini prematurely janma hoichi. So prematurely janma mane setebale Shakespeare jani nathile. Medical science develop karna ta cesarean section, C section ba cesarean jani nathile. Tane Macduff cesarean e janma hoichi. Sei bhaliya lokote tate maribo. So these are the predictions the three witches made. And Macbeth segudako sabbu biswas kari jaichi. So what Shakespeare tries to say is they three witch mane semane jo supernatural element achanti semane tamo bhitar luchikri jota achi dabi hi suppressed hi jo feelings jo ambitions jora achi lobho achi seita hi semane it represents them. Understand? Tenu Macbeth kon karchi with the help of his wife kills King Duncan ko marchanti. Once the king is killed, then the lady Macbeth, she has insomnia. She can't sleep properly. Tapare Macbeth last act 5 last asichi. Jetabale Satan asikri kahichi je Lady Macbeth has committed suicide. She has killed herself. The settle Macbeth finds the life re kon achi kon. Our last word life is but a walking shadow. Poor pair who frets and struts, full of sound and fury, signifying nothing. It has life is meaningless. A poisa, ambition, power, position, tahar kichhi mane nahi. Nothing has any value. This is the famous. Macbeth, Lady Macbeth, Duncan, semane mari sarla pore, Lady Macbeth jo kohuchi how I am going to wash the blood. Entire Lady Macbeth ro sab pura titinta achi tar dialogue taku pura mon rakhi padibo 3-4 tar padle mon rahi jaythibo, so that asile immediately you can make out. Aw gote hala Macbeth re eta act 5 re eta is the famous soliloquy of Macbeth. Okay, it is Macbeth. So reference context tak mon rahile you will never forget that ko time re eta ko kohaichi Satan asikri kahichi Macbeth ko je Lady Macbeth is dead. So Macbeth dekhuchi mate moro pillar of strength my wife kiye gala sabbu jaichi. Age cannot wither her nor custom stale her infinite variety. These lines are written about a Shakespearean heroine. Identify the heroine. A. Cleopatra, B. Miranda, C. Desdemona, D. Viola. Tell me the answer. The answer. It has the most famous lines. Very, very famous lines.
normal way भी माने Hollywood film रे सब they used to utter this dialogue. Come on, answer A. Sonali Mudali Cleopatra. It is Cleopatra. Answer को सेठी केबे सुनो Google देखी कोन एटा होची the answer is Cleopatra because Miranda होची Tempest रो heroine. Desdemona होची Othello of Desdemona, Othello रो heroine. Viola होची 12th night रे. Duke Orsino of Viola. Understand? So this is Cleopatra, the heroine of the great Shakespearean play Antony and Cleopatra. Jahaku later on again Antony and love for all, sorry, yes, all for love. Dryden lekhle all for love, a heroic tragedy based on Shakespeare's Antony and Cleopatra. So Cleopatra, what does it mean? Age cannot wither her. She was beautiful. Cleopatra was a very beautiful but enchanting woman. बहुत unpredictable, बहुत shrewd थिला से Cleopatra. And say Cleopatra and say एमिति mesmerize करची Antony को that Antony Cleopatra कौन है ची एमाने थिले Roman Empire रो Julius Caesar time रो Antony को दिया है तो Mediterranean Sea कितना एरिया तो मैनेज करिया पे Mark Antony सही जगह से he sees Cleopatra and he falls blindly in love with Cleopatra. So when he falls blindly in love with Cleopatra, ताकु तारा Enobabus ता friend गोटे कहूची जे friend माने कौन they are all small little generals और तांकर associates सबु lieutenants and all. They said listen to say lady रा चक्कर रे पड़नी किंतु जेते चेष्टा करिची एंटनी मानिबा को नाराज से पूरा पागल प्रेमी हो जाइछ मार्क एंटनी किंतु इज जस्ट लाइक एन इंडियन फॉलोइंग इन लव विथ अ पाकिस्तानी जेमती प्रॉब्लम हबो पॉलिटिकली ठीक है पर्सनल लेवल इट्स ऑल राइट बट व्हेन यू आर ए पॉलिटिकल फिगर इट इज अ डेंजरस थिंग एंड मार्क एंटनी लास्ट से न मानुची तो सच्ची ये इनोबाबस कहूची जे एज कैनॉट विदर हर तर एमिति चार्म अच्छे से एमिति फसई दब एज कैनॉट विदर एंड सी सो अनप्रेडिक्टेबल कस्टम स्टेल और इन्फिनिट वेराइटी माने शी हैज नंबर ऑफ शी इज अ श्रूड पॉलिटिशियन भलो स्ट्रेटजी शी इज टू चॉक आउट गुड स्ट्रेटजीज एंड शी इज अनप्रेडिक्टेबल Cleopatra is why he says that age cannot wither her nor custom her infinite variety. Ultimately Mark Antony को Octavius Caesar Julius Caesar पुओ Octavius Caesar कहूची जे ठीक अछि मो भौणी के तू बाहि जा एंड तापरे एंटनी बाटकान से आकू क्लियोपेट्रा कब्जा रु खसिया को समान ट्राई करछन समस्त वेंडिटियस आरंभ करी समस्त दे आर ट्राइंग रोमन जनरल्स इवन समान तो कहिछन एंट मार्क एंटनी को वेंडिटियस कहूची जे लुक तू जदी क्लियोपेट्रा को छाड़ दबो मु आमे तते इजिप्ट संगे फाइट करे पे अन्य जतक हमर बैटल अछि आई एम गोइंग टू हेल्प यू वो सोल्जर्स हेल्प करिवे मार्क एंटनी एनीवे फाइनली ही डाइज बोथ एंड क्लियोपेट्रा आल्सो डाइज आई एम नॉट व्हाट आई एम. Which Shakespearean villain makes this statement about himself? I am not what I am. I am not what I am माने मु जहा देखा जाउची बा जहा मु जहा देखुचो मु सेया नुहे एबडा स्टेटमेंट के दिए हीरो के दबनी हीरो सब भल लोकटे टेल मी सबु जाक शेक्सपियर रो ट्रेजेडी जोटा तार मेन कैरेक्टर और विलेन गुडे को मन कैरेक्टर इट इज इयागो ओथेलो इट इज ए शाइलॉक बी एडमंड सी इयागो डी कैशियस इज इयागो बिकॉज शाइलॉक इज मर्चेंट ऑफ वेनिस एडमंड इज इन किंग लियर कैशियस इज इन जूलियस सीजर
So it is Iago of Othello. कारण सी कन्स्टांटली इयागर राग रोचे कहीं ना सी जो पोजिशन रहा चाहिए से सही पोजिशन ताकू दिगलानी तेणु तार कन्स्टांटली अथेलो पर राग अच्छे तेणु जो डेस्डिमोना बाही अथेलो बाही डेस्डिमोना को डेस्डिमोना इज वेरी ब्यूटीफुल तो अथेलो को सब बेले कैसियस सॉरी इयागो कही चलती डोंट वरी आई एम ऑलवेज विथ यू समस्त से जड़े दूचे इंप्रेशन दूची जे आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल किंतु से निजु को कहूची ऑडियंस को कहूची बिकॉज एटा प्लेट ना जे देख आई एम नॉट आई एम मु जहाँ बर्तन तुम देखुच मते आई एम नॉट दैट आई एम नॉट ए हेल्पर आई एम नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग आई एम ए विलेन एटा इजिली जन लोक कर परिबो बिकॉज एभला स्टेटमेंट किए दबो आम जो कहूँ हिपोक्रेसी माने वन मे स्माइल एंड येट बी ए विलेन तुम से तुम भीतर भीतर तुम एगेंस्ट से काम कर चलती तुम जानी पारन इयागो इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन After Faustus signs the pact with the devil, two Latin words appear inscribed on his arm. Homofuge. These words can be translated into English as A. Fly man, B. Empty soul, C. Thou art damned, D. Property of devil. Come on, quick. After Faustus, समस्त डॉक्टर फास्टस पढ़ी क्रिस्टोफर मार्लो शुण मोस्ट इम्पोर्टेंट मु तुम पे कहली मु थ्रू आउट जी क्वेश्चन अवेलेबल मु से क्वेश्चन देखला परे मु गोटे पैटर्न पाउची जो जो आरंभ कही चलती जब तो आरंभ कले क्लास जे जो जो पिला माने जो जो बुक गुड़ाक बही टेक्स्ट गुड़ाक अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रे सिलेबस रे तमरो थिला प्रेस्क्राइब्ड हेची सेही बही गुड़ाक भलरे पढ़िबो डॉक्टर क्रिस्टोफर मार्लो रो मैक्सिमम जोड़िए बही रु क्वेश्चन आस पारिबो व्हाट वन इज एटा द जू ऑफ माल्टा आ गोटे हला सॉरी योर जू ऑफ माल्टा इट इज टैम्बरलेन किंबा एटा होची डॉक्टर फास्टस एंड डॉक्टर फास्टस समस्त प्रेस्क्राइब हेतला So Dr. Faustus, you know, he is a scholar who sold his soul to the devil for 24 years. 24 वर्ष एग्रीमेंट करके पैक्ट करथला जे मु तम पार्टी रे रहिबी. So there is a good angel, it's a morality play by Christopher Marlowe. So you find the good angels and the bad angels on the stage. That Faustus जे लाइफ रे सबुट बड़ भूल करया जाउची डेविल संगे पैक्ट करया को जाउची. When Faustus is going to sign the pact with the devil, that the good angel comes in the Faustus, God is there to ask and the bad angel says, no, you come here. So, ये जो द्वंद्व, the dilemma, जे करिबी कि न करिबी, ये जो dilemma Faustus अछि 24 years पे he signed the pact with the devil, and ultimately Faustus was damned. So when Faustus was damned, last 24 years sorry asuchi. एमिति डॉक्टर फास्टस रे एक्ट 5 टाकू भलरे पढ़िबो. पर्टिकुलरली जो लास्ट सीन कौन लिखा मैम मो ग्रामर कथा पिला मु कहि परबिनी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा तो इंग्लिश लिटरेचर आसीओनी आमे पीजीटी परीक्षा कथा कहूछ पिले एस हमरो होची एसएसबी रो पीजीटी रे को क्वेश्चन आस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रामर आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरेचर हैला. तो लिटरेचर
सो ये जो जिनसटारे लास्ट एक्ट 5 टा को पढ़िबो जोठी कि फॉस्टस आ घंटाटे अच्छे 11टा बाजिला एंड फॉस्टस इज थिंकिंग जे मु काहे की कली आई वांट टू लिव टू गॉड कि कौन करिबे भगवान मते केबे एक्सेप्ट करिवेनी बिकॉज आई हैव deserted God. I signed a devilish pact with the devil for 24 years. मते केही रक्षा कर परबेनी तापर अगेन बंधुगरी कहछि जे काहे कि मो बापा मां मते जन्म देले why my parents gave me birth तापर कहछि ना ना तांकर कोन दोष भूल तो मोर हिची एमते एमते हेकि लास्ट रे जतबेले प्ले सरीची 12टा बाजी जाईची 24 वर्ष सरीची लास्ट लाइन लास्ट वर्ड मेफिस्टो डॉक्टर फॉस्टस रहउची मेफिस्टोफेलिस जस्ट पूर्व कहछि लूसीफर तापर कहछि मेफिस्टो द प्ले एंड्स अंडरस्टैंड तो एक्ट 5 टाकू पूरा भले रे पढ़िबो एनीवे इट इज फ्लाई मैन होमो पर होमो सैपियन आ कोन मनुष्य कोन कोनती होमो सैपियन होमो माने मैन और फ्लाई मैन और कोन Which play of Shakespeare is being read as a post-colonial text? Which play of Shakespeare is being read as a post-colonial text? A. The Merchant of Venice. B. Twelfth Night. C. Winter's Tale. D. The Tempest. उठे नहीं आई डोंट अंडरस्टैंड पिला तुम कौन कहूच माने इंग्लिश ग्रामर कथा कौन कहूच मु तुमको लिटरेचर पीजीटी एसएसबी पीजीटी रे जो इंग्लिश रा जो क्वेश्चन आस्ता तुम माने ओपीएस रो पीजीटी दोच 2023 एसएसबी जो पीजीटी परीक्षा हेतला जे गवर्नमेंट स्कूल गुडा के हायर सेकेंडरी स्कूल पे दीस आर दीस क्वेश्चंस सेटा द टेम्पेस्ट नाउ टेल मी तमें तो खाली पढ़ीदेल जे देख आंसर देखीदेल द टेम्पेस्ट व्हाट इज अ पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट मते कहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पोस्ट कॉलोनियल को कौन बुझ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय colonialism England from the 18th century onwards started colonizing process became colonized almost the whole of Asia and Africa, and we were included. We were also colonized. So Second World War pore colonial period sari gala England ro colony guda ko jo heitla almost most of the countries from 1945 onward सब धीरे धीरे समस्ते independence पाई गले. They became independent sovereign countries. So in a post ताको कहते post colonial, that means colonial is colonization रो परवर्ती अवस्था post ता परे. So what happened in the post colonial text तमे देखिबो they mostly discussed about racism, the relationship between colonizer and the colonized, and a ruler and the subject, then imperialism. एगुड़ाक हूँ तार टेक्स्ट. These are the main themes on which the post-colonial texts and post-colonial criticism primarily deal with. Understand? So Tempest को समाने कहीं की गले post-colonial study रे जेतोले Edward Said wrote his Orientalism. He made a study. They बहुत post-colonial critics they came forward. Scholars came forward and said, like Joseph Conrad's Heart of Darkness, that was a post-colonial text because it talks about racism, the superiority of the colonizer, and their right to subjugate the colonized. Then Tempest को कहा जाए सेटा. Tempest is the last work of Shakespeare, the last play of Shakespeare, and in Tempest सेटा को समाने केमती भाबरे इंटरप्रिटेशन करछन्ति. प्रॉस्पेरो जो आइलैंड आसी रही प्रॉस्पेरो रही
सेठी से एरियल को फ्रीडम दौना because he has that power Prospero. So Ariel is not getting freedom. Ariel को से promise कर चलचंती. Story टा पढ़ो. Prospero's daughter is Miranda. She जेतेबेले आसिकरी when Prospero lands in that island. सेठी रहिचंती को माने ना तांकर जो natives माने savage. जेमिति से माने इंडिया आसिले जो colony Britishers they came. So India कौन land of snake charmers. ସେମାନେ इंडियंस को कौन देखिले जे लोक गुड़ाक कहा संगे पड़ूनी दे आर इन द डार्क एजेस दिस कंट्री इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट दिस कंट्री इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सोशल इविल्स चाइल्ड मैरिज सती इट्स अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स इंडिया इज अ लैंड ऑफ फास्ट feast and festivals. That is what the Westerners came to know. That India is a land of fast. That is, लोग बहुत पूजा करते उपास रहती. Feast, दिन राति भोजी. और festivals. प्रति every 365 days है festivals. कोई ना कोई जगह इंडिया रे गोटे festival टे होती. So India is a land of feast, fast and festival. This is the impression they had about the Indians. And they are savage. तांको हमें refinement देबू तांको हमें civilization सिखेबू and Prospero does that to Caliban. Caliban to से सबू जाक हासिल करने गला जेंती ब्रिटिशर्स नेटिव मान को किछि पैसा देकरी तांको तांको इंडिया विषय सब खबर नेले डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करिकि प्रति राजा को हरैछंती सेमिति Prospero Caliban को धरिकरी से एंटायर एरिया रे आइलैंड रे कोटी कोन मिलुची कोटी कोन भलो every details he gathers from Caliban. Then he tortures Caliban. So Caliban, so he tells that Caliban, you are savage. So Prospero is a colonizer, British government, Britisher. Caliban huchi सबु जाका आम भले नेटिव and Caliban Prospero को लास्ट रे कोन कहिची Prospero tells Caliban जे तू होछु गोटे beast. Animal level थिला civilization कौन जानी नथिला I taught you language. So Caliban says you taught me language and more कौन पाइली तर benefit होची I know how to curse. लोकों को किंतु गाली दे पारिबी लोकों को किंतु अभिशाप दे पारि that is more benefit हला या तो सेईटा को से माने entire play टा को interpret करिक बाहर कले जे एई play टा पूरा पूरी जो colonizer Britishers आउ जो सब्जेक्ट जो देश गुड़ा के कॉलोनाइज करथिले तांको भलिया स्टोरी सो टेम्पेस्ट इज रेड एज ए पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट वेयर Caliban represents the colonized, Prospero represents the colonizer. जोटी Prospero निजर सुपीरियरिटी करूची आई एम सुपीरियर सबू फायदा नहीं सारी कि तांको ही से लास्ट लाथ मरची Prospero. Ariel constantly कहूची तमे मते प्रॉमिस करतलो फ्रीडम काहे कि दोनो ultimately Prospero since it is a play it ends Prospero, Ferdinand and Miranda they marry and everything comes to a happy ending and Ariel gets freedom. Sethipai Tempest is considered is read as a post-colonial text. Now you understand why? Yes or no? Tell me. The colonial text it is not slave and master. एते कथा बुझेला परे पुणे again से जिनसटा कोन कहउछ. It is represented as a colonial post-colonial text. So option D is the right answer. Next, he affects the metaphysics not only in his satires but in his amorous verses. Who has said this about John Donne? Who has said this about John Donne? A. Raphael Holinshed, B. T.S. Eliot, C. Samuel Johnson, D. John Dryden. The answer is option D. John Dryden. John Dryden was the first who used the term metaphysics. When he read in his discourse on satires, John Dryden,
he read John Donne, he said he affects the metaphysics. That means the medieval scholastic, using the arguments of the medieval scholastic theology, medieval scholasticism. So those kind of a comparison, that language Donne is using is very, very difficult to understand. That's why Donne says, Dryden says, Donne affects the metaphysics. ପରେ ତାକୁ Samuel Johnson ତାକୁ ଗୋଟେ metaphysical school of poets ବୋଲି କହିଲେ. Okay? Which poem of Andrew Marvell is famous as a Carpe diem poem? A. The definition of love. B. To his coy mistress. C. The unfortunate lover. D. The garden. What is a Carpe diem poem? Carpe diem poem means it's a Latin word. Seize the moment. Seize the moment. Use the present. That means use the present. Don't waste your time, because time is short. Everything is short. Human life is also short. So, a short time bhitere, don't go on procrastinating. Don't go on delaying things. So, in To His Coy Mistress, Andrew Marvell tells his mistress that don't waste time. Seize the moment. Jete quick amar kariva katha immediately karo. Sethipai To the Coy Mistress, To His Coy Mistress is treated as a Carpe diem poem. Okay. Option B is the right answer. To His Coy Mistress. What is the central conflict in Dryden's All for Love? The central conflict between in Dryden's All for Love. देखो सब जाक क्वेश्चन कौन है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस एंड्रू मार्वल हमर सिलेक्ट आम बेले भी एंड्रू मार्वल थिला पोस्ट ग्रेजुएशन रे टू हिज कॉय मिस्ट्रेस ही थिला गार्डन और टू हिज कॉय मिस्ट्रेस ए दीटा प्रेस्क्राइब हेता सब जहाँ सिलेबस रे सेटा को जे भल रे पढ़ी ची ए एंटायर क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली से करि परिबे. Now what is the love and what is honor? Because all for love, Dryden कौठू बेस कले Shakespeare's Antony and Cleopatra. So Antony and Cleopatra, the love for what? एपटे रहिला love for Cleopatra, सेपटे छि honor. The second triumvirate थिला Mark Antony. Because Octavius Caesar, Mark Antony, Lepidus. Triumvirate माने तीन जण, tri माने 3. So आगुर कौन थिला the Julius Caesar को तार Cassius और Brutus ता friend ए माने मारथिले Julius Caesar को. अब Mark Antony was supporting Julius Caesar. So the second triumvirate हला सेतले Mark Antony, Lepidus और Octavius Caesar थिले Julius Caesar को. So Mark Antony also, he stands for honor of Rome and his love for Cleopatra. So he is torn between love and honor. It is love versus honor. Option C. Whom does Mirabell in The Way of the World deceive into believing that he loves her? A. Millamant. B. Mrs. Fainall. C. Mrs. Marwood. D. Lady Wishfort. Again, this is Congreve's Way of the World. विलियम कॉन्ग्रीव को प्लेटा आरंभ बहुत दिन लास्ट 30 इयर्स ला प्रेस्क्राइब ही अछि वे ऑफ द वर्ल्ड कॉन्ग्रीव करा. सो वे ऑफ द वर्ल्ड टक्सिन भले मन रखिबो. द टू मे हीरो एंड हीरोइन है मिलेमेंट एंड मिराबेल. सो इट्स अ कॉमेडी ऑफ restoration comedy. This is a restoration comedy, the comedy of manners. It is Lady Wishfort.
So, which of the following works by Dr. Johnson is an imitation of the 10th satire of Juvenal? A. London, B. Vanity of Human Wishes, C. To a Young Lady on Her Birthday, D. Ode on Friendship. Juvenal, Horace. Horace and Juvenal, they are the two Roman satirists. Horatian satire ta hochi sabbubele. Horatian satire is like Horace and Juvenal. So Juvenal satire ko Johnson use karchanti. Gota hela London re, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା Vanity of Human Wishes. So 10th satire of Juvenal hochi Vanity of Human. Option B. Because एमाने सब neoclassical थिले. Greek Roman model को समाने imitate करथिले, copy करथिले. Purely copy करथिले Pope और Alexander Pope. Identify the 4 18th century novelists who were called the 4 wheels of the novel. Eta mute early 18th century novel padhela I have told you. Who are the 4 great pillars or the 4 wheels of 18th century novel? Now answer this question. Identify the 4 18th century novelists who were called the 4 wheels of the novel. Option A, Samuel Richardson, Henry Fielding, Tobias Smollett and Jonathan Swift. B, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding and Tobias Smollett. C, Samuel Richardson, Henry Fielding, Tobias Smollett and Lawrence Stern. D, Samuel Richardson, Henry Fielding, Jane Austen and Lawrence Stern. The option C is the right answer. Emmanuel 4. John Richardson, Henry Fielding. Richardson used the epistolary novels, novel in the forms of letters. Then Tobias Smollett and Lawrence Stern. He did with Lawrence Stern, Henry Fielding dealt like depicted a picaresque variety of novel, and Lawrence Stern about the stream of consciousness, which it's a kind of a psychological novel. So option C is the right answer, because Jane Austen 19th century SEL. So this is not 18th century. So Jonathan Swift, he also is not a part of it. Emmanuel 4, Richardson, Fielding, Tobias Smollett and Lawrence Stern. Option C is the right answer. Next question. How does Wordsworth address the river Wye in the Tintern Abbey? सेमती वर्ड्सवर्थ पढ़ला बेले लुसी पोएम्स को बढ़िया से पढ़िबो आ टिंटन एबी टाकू एकदम बिगिनिंग रु डैफोडिल्स टिंटन एबी एकदम आरंभ रु शेष जाय पढ़िबो बिकॉज़ टिंटन एबी रिलेटेड क्वेश्चन टे निश्चय आसीबो टिंटन एबी रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन निश्चय तेणु टिंटन लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबी साकू पूरा पूरी ए टू जेड पढ़िबो O sacred why, B O majestic why, C O sparkling why, O sylvan why. It is sylvan. Option D is the right answer. He writes, "Oh, sylvan why that flows through the woods." He says that flows through the woods. The river. The line गुड़ा का मन रखियो. Next question. What does Coleridge say about the identity of the damsel with the dulcimer
in Kubla Khan? A. She is an Abyssinian maid. B. She is an English maiden. C. She is a Greek girl. D. She is a Mongolian maid. Kubla Khan सबु बेले प्रेस्क्राइब रही सिलेबस रे क्वेश्चन कुबला खान रो आछि टिंटना भी प्रेस्क्राइब रही सिलेबस रे टिंटना भी क्वेश्चन आछि तो जो गुडा को प्रेस्क्राइब रही द एग्जामिनर और द बोर्ड वांट्स टू नो पिला ठीक से टेक्स्ट गुडा को पढ़ी ना नहीं जो पिला टेक्स्ट पढ़ी से पिला पाइबो जो पिला टेक्स्ट न पढ़ी के नोट पढ़ी से पिला को कष्ट होबो दैट्स इट दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट एक क्वेश्चन आंसर दियो कुबला खान इज अ पोएटिक प्रोसेस पोएट्री केमती लिखा जाए कॉलेज ओपीएम खाइकरी पूरा गंजाई निशारे गंजोड़ थिले गंजाई निशारे सोइचंती एमतिया हरियाला ईस्ट माने कलरफुल ड्रीम सब देखाई देखिछन that colorful dream it is Kubla Khan. Wow. So she is an Abyssinian maid. Option A is the right answer. 14. The images of 4 harvesters depicted in Keats' Ode to Autumn as a winnower, a reaper, dash and a cider maker. A gleaner, B a fruit gatherer, C a thresher, D a ship sailor. Ode to Autumn is one of the most matured poems of Keats. When he died at the age of 25 years, close to 26 years he died. Such a young age when he died. Ode to Autumn where there is optimism. Sabu jako ode pessimism thila. Ethre some kind of a resolution is there. Je autumn probably kichi bhalo jinso achi. Wow. Our answer likho. Quick. Google आंसर पाओ ना Come on quick आंसर मिलुनी Google रू John Keats wrote 6 odes. ये 3टा ओड मिनिमम पढ़िया पड़िबो Ode to a Nightingale, Ode on a Greshner and Ode to Autumn. ये 3टा Keats को ओड को पढ़िया पड़िबो. It is option A is the right answer gleaner. तो 4टा प्रोसेस विनोअर टा कौन धरिन धान धानटा को विनोअर हूँ कौन जे उड़े धान को उड़ाती धान बेंगला कला पर जो उड़ाती धानटा से कौन हुए ना ता जो छापटा चोपाटा बाहरी जाए ग्रेनटा रहे दैट इज विनोअर क्लीनर रा काम है रिपर कौन हुए हमर हार्वेस्टिंग केमती हुए धान हो गला धान बा गहम हो गला रिपर है आग तक धान काटती काटी सारा पर कौन करती क्लीनर काम कला एकाठी गदेवा गैदर करवा तापर विनोर ताकू सफा करे एंड साइडर मेकर होची साइडर प्रेशर but the cider presser is trying to find out the juice from the apple so that is cider maker so it is option A is the right answer a gleaner. It is better to have loved and lost than never to have loved at all. That is the famous line of Lord Tennyson.
This most well known of Tennyson's quotes come from A. Break, 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 B. Ulysses, C. In Memoriam, dedicated to his friend, in memory of his friend Arthur Hallam, D. Crossing the Bar. You must cooperate. समस्त आगु भी पीजीटी रा एसएसबी रा 2023 करथिबो तो आंसर ता फटाफट कहिया कथा एनीवे इट इज इन मेमोरियम which of the following poems of Browning is not a dramatic monologue? Browning, Robert Browning, a Victorian poet who married to Elizabeth Barrett Browning, he is the champion, he was the pioneer of dramatic monologue, where he delved into the psychology of a character. So, all his poems were mostly dramatic monologues, mostly. Fra Lippo Lippi, My Last Duchess, joti monologue hochi kon, mono mane one. So, the character in a dialogue form, the character speaks. One character speaks. It's a dramatic monologue. So, it hochi Pippa's song, joti ki the last is where Robert Browning says, if God is in heaven, all is well in the world. Chottiya poem te. But that shows Browning's attitude to Victorian compromise. Your Victorian problem thila, Victorian conflict between science and religion. Ei jinsare Tennyson made a compromise. Matthew Arnold could not make any compromise. So, Arnold went to the past. He went to the classical period, to the old, to the past. And Browning, he ekdam bindas. ठीक अच्छे कौन से एठी कौन हवा कथा हो भगवान जदि if God is in heaven भगवान जदि ऊपर अछंती पृथ्वी रे सब किछि ठीक हबो. So Browning had this kind of an attitude towards the Victorian conflict. So Pippa's song may be a very small little song poem. In the poem, the last two lines shows the attitude of Robert Browning. Option D is the right answer. Which novel starts with the famous statement, it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife? Tell me. In which you are not even halfway. Which novel starts with the famous statement, it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife? It is Pride and Prejudice. Is the Bennet family, Elizabeth Bennet, and the landowner Darcy, the dashing, smart, handsome Darcy. It is option B, Pride and Prejudice of Jane Austen. Which novel of Charles Dickens is a Bildungsroman? A. Tale of Two Cities, B. A Christmas Carol, B. C. David Copperfield, D. Hard Times. Okay. Now tell me, Abbuta Lekhila, it's an autobiographical novel. David Jadi, the only novel which is totally purely autobiographical, seta hochi David Copperfield. Bildungsroman novel hochi, agu gote hochi Dickens ra Bildungsroman hochi Great Expectation. Eti Great Expectation nahi. A Tale of Two Cities about the two cities of London and Paris. A Christmas Carol, early Dickens taku lekhithile.
Hard Times is about the education system of utilitarianism. It's about Thomas Grandred, C.C. Jupe, emanko bisare. So, and Joshua Bounderby. David Copperfield, what is a Bildungsroman? What is it? What does it mean? It's a German term. It is a German term. It is made up of two words, Bildung and Roman. Bildung ra mane hela education. Roman hela novel. It's a novel of education. तार सब बेले सब बिल्डिंग रोमान नोवेल रो गोटे रहा फॉर्मेट फॉर्मेटा कौन डिसइंटीग्रेशन माने लॉस छोटे पिलाटे अच्छी बाप माँ मरी जाइए माने द चाइल्ड इज लॉस्ट देन द चाइल्ड टेक्स ऑन ए जर्नी जमती तो मरबन सुइसाइड कर से पिलाटा केमती केमती संसार बंचब से तो से केमती तार मूव कर जर्नी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ से पिला लाइफ रे कौन कौन सब देखुची को एडवर्स कंडीशन पढ़ुची केते केते एडवर्सिटी को फेस करूची केते कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन फेस करूची केते बेले जेल जाउची केते बेले मारा खाउची केते बेले कहार हेल्प पाउची एमती करी 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 अल्टीमेटली कौन हुए ना से पिलार मैच्योरिटी आसी जाए गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे से एते इंचर्ड पका हो जाए एते मैच्योर्ड हो जाए जे ताको लाइफ रो कोनोसी प्रॉब्लम ताको कष्ट ताको किछि प्रॉब्लम भला देखा जीवन. So that is called a Bildungsroman novel. So in this kind of, so in David Copperfield हो कि Great Expectation हो एगुड़ा होची कौन ना पीप होची गोटे यंग बॉय ऑर्फेन बॉय बाप माँ नाहंती भौणी भिणे पाखे रोची से केमिति एस्टेला आसी पहुंची मिस हैविसन ताकु एक्सप्लोर करची हाउ एस्टेला इज ट्राइंग टू ब्रेक पीप्स हार्ट अगेन पीप गोज टू लंडन ने केमती सी जैगर्स जो लॉयर ताकु नेउची एबेल मैग्विच तो सी बड़े से भाभी पीप इज गोइंग ऑन थिंकिंग जे मोर बेनिफैक्टर मत कि लंडन एत हाई सोसाइटी बुलाऊची हूँ मिस हैविशम से कहीं करती ही वांट दैट आई शुड मैरी एस्टेला से भाभी नहीं जाऊँ तो से जो हायर लेवल को पड़े जाइए पीप इज नॉट रिकग्नाइजिंग जो भिड़े पे एत काम करता जो को से रिकग्नाइज करूनी चिन्ह दौ नहीं देन व्हेन पीप इज इन ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल ताको केही सहायता करे आसुनांती इज जो हु इज कमिंग टू हेल्प हिम आउट सेठी जो पीप एट द एज ऑफ 40 से तार मैच्योरिटी आसुची जे मो लाइफ रे जहा जहा करछि बहुत भूल करछि एटा कोटी मैच्योरिटी दिस इज अ बिल्डिंग्सरोमान नोवेल अंडरस्टैंड तो सब बेले बिल्डिंग्सरोमान कोन होय ना कोटे नोवेल पैटर्न प्रथम हैला लॉस और तमे गोटे सोसाइटी बा आइसोलेटेड हो गला देन यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ लाइफ सो इन जर्नी ऑफ लाइफ यू आर एक्सपोज टू मेनी थिंग्स बहुत जिन सुख दुख माने राइज एंड फॉल सब देखिबो देखि देखि अल्टीमेटली गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे तमे मैच्योर्ड हो जाइतो दैट इज कॉल्ड ए बिल्डिंग्स नॉवेल एंड आउट ऑफ दिस 4 नॉवेल्स ऑफ डिकेंस जोड़ा देइची डेविड कॉपरफील्ड इज राइट आंसर. Let us go then you and I when the evening is spread out against the sky like a patient it raised upon a table. Which modern poem starts with these lines? A. Wild nights, B. Love, C. A love song for Lucinda, D. The love song of J. Alfred Prufrock. वो T.S. Eliot पढ़ेला बेले बहुत भलरे पढ़ेछि T.S. Eliot. को आंसर को The love song answer is D. The love song of J. Alfred Prufrock, where Prufrock sees many women come and go, talk of Michelangelo. I keep my trousers rolled. So J. Alfred Prufrock poem टाको मु सत्ते बड़े भी कही थी जे T.S. Eliot पढ़ेला बेले Hollow Man, J. Alfred love song of J. Alfred Prufrock आउ Westland. भल टिके पढ़ी
because you are definitely going to get questions on TSC late, you are definitely going to get questions on WB Yeats. So, ei gudaka padibo. So, proof rakra eta. Let's go, you and I, when the evening is spread out against the sky. Mo already dei deichi jo maro purba class gudaka I have written down. ei gudaka TSC late ei lines gudaka mane rakh. Love Song of J. Alfred, proof rock. An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick. Which poem depicts an aged man like this? माने गूगल न देखिए जेकोसी पिला जे पिला प्रिपेयर करछु परीक्षा पे एटलीस्ट से गूगल को न जाई कि आंसर ता फटकिर कह दबो. A. Selling to Byzantium. B. When you are old. C. The second coming. D. The Lake Isle of Innisfree. A Charitajanko poem, undergraduate or postgraduate? Prescribed. Yes. It is option A, selling to Byzantium, because this is no country for old men. That is why he wants to go to Byzantium. This is a country where young men and women arm in arm, they move around. It's a place with fish and fowls. In selling to Byzantium. This is no place country for old men. So, selling to Byzantium. The tears of the world are a constant quantity. For each one who begins to weep somewhere else, another stops. The same is true of the laugh. In which absurd play do these lines occur? A. Who is afraid of Virginia Woolf? B. Rhinoceros. C. 6 characters in search of an author. D. Waiting for Godot. It is Waiting for Godot by Samuel Beckett. Waiting for Godot by Samuel Beckett, where he says that where if someone is crying here, jenti amar nahi law of matter jota, matter is neither created nor destroyed. It is transformed from energy of matter is transformed from one form to another. So, the quantity hochi fixed. ତେଣୁ ଯେମିତି ଟିୟର ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଫିକ୍ସଡ, ଯଦି ଏଇଠି ଜଣେ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିଥିବ, ସେମିତି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ସେମ୍ ଟ୍ରୁ ଫର୍ ଲାଫିଂ ଅଲସୋ. ଇଫ୍ somebody is laughing here, ଆଉ ଜଣେ ସେପଟେ ବନ୍ଦ କରିଥିବ laughing. Understand? So, it is Waiting for Godot by Samuel Beckett. James Joyce's Ulysses tracks a single day in the life of A. Leopold Bloom, B. Stephen Dedalus, C. Richard Best, D. Molly Bloom. Again, Ulysses टा कि पढ़िबो, जेम्स जॉयस को यूलिसेस पढ़िबो माने टेक्स्ट पढ़िया कथा कोन, एटलीस्ट स्टोरी टा को पढ़िबो.
No, it is not Stephen Dedalus. Because Ulysses, James Joyce कर Ulysses, James Joyce कर secretary किए थे सेटा भी तो मु कहि आगुरु. It was Samuel Beckett ताका secretary थिले. James Joyce was a genius. So Joyce करो Ulysses रहउची tracks the, it's about 3 Dubliners. Ireland रो capital होची Dublin. Dublin रे 3टा लोकंकर जर्नी गोटे दिन रे. तो दिनटा होची 16th June 1904. A day is 16th June 1904 रे 3टा कैरेक्टर लियोपोल्ड ब्लूम, मॉली ब्लूम, स्टीफेन डेडालस ए 3 जनकर 24 आवर्स भितर कोन हिच. यूलिसेस records that. So it is mostly तांको भितर होचे लियोपोल्ड. Option A is the right answer, Leopold Bloom. 3 जनक लियोपोल्ड ब्लूम, स्टीफेन डेडालस और मॉली ब्लूम. It's they are the 3 Dubliners. They are from 3 people in Dublin on 16th June 1904. गोटे दिन रे तांका लाइफ, तांका एक्सपीरियंस. Make it new is the renowned rallying cry of modernism. Who started this slogan? Ezra Pound wrote a book, Make It New. He started the Imagist movement, and he said that bring innovation in poetry. The old way of lekha heichi, jemti Johnson wrote preface to Shakespeare, that what are the Shakespeare को आमे सबु बड़े flawless भाभी नोचु, blameless, flawless. ये सिया होचे जहाँ करचु सबु ठीक लिखचंती. But Johnson preface to Shakespeare called no. Let me write a preface where I will tell what were the flaws of Shakespeare and what are the factors that helped in his greatness. He wanted to show both the flip side and the flop side, the pros and the cons. Semiti, preface to the lyrical ballads. Why did William Wordsworth write the preface to the lyrical ballads? He wrote because lyrical ballads was published in 1798. Then it was a new kind of a poetry. Setabale lokone Pope, Dryden, emanku 18th century poetry पढ़ुछुती. So लोकों को suddenly change करेया खेले, how far the reader is accepting you. So Wordsworth भाभी नले जे reader माने वो poem पढ़ी पढ़ they will like it. But his friends said no. Don't rely on that. Don't rely exclusively on the readers. First see the whether तेणु तमें प्रथम एक्सप्लेन करो तुम पोएट्रीटा कौन कहीं लिखिल. Why are you writing about the common man? Why are you writing in the common man's language? You have to explain your stand. You must explain. Then only you can write about. That is why Wordsworth wrote preface to the lyrical ballads. Okay. Semiti, make it new. Ezra Pound is saying जे इनोवेशन आनो जो लिखिछन से अबाउट इमोशन ये सब जिनस गुड़ाक 19th century विक्टोरियन पीरियड लिखाला. मॉडर्न पोएट्री राइट इट इन अ डिफरेंट वे. सो सरियलिज्म केते कोन आसीगला, इमेजिज्म, सिंबल्स, all these things they started using in modern poetry. Jimmy Potter, the angry young man, is the central character in A, the birthday party, B, look back in anger, C, ghost, D, mother courage. Jimmy Potter, the angry young man, is the central character in A, the birthday party, B, look back in anger, C, ghost, D, mother courage. Again Jimmy Potter थिला prescribe हेची.
It is option C, look back in anger. Jimmy, Allison, Helena, Cliff. Where Jimmy was a sweet educated graduate and he is running a sweet stall, and always every day a newspaper and he goes on shouting, goes on criticizing, shouting at every institutions of the country, of the state. He is an angry young man. So it is Look Back in Anger by John Osborne. Which line from a Shakespearean play is repeated several times throughout Mrs. Dalloway? A. Out, damned spot, out I say. B. Fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rage. C. If music be the food of love, play on. The course of true love never did run smooth. This is from 12th Night. This is the course of the true love, about constancy. I think sonnet number 116. This is option B, where Mrs. Dalloway, Mrs. Dalloway of Virginia Woolf, records gotte dinara ghatana. Mrs. Dalloway marries Richard Dalloway, but upper middle class lokotaku, higher society, elite society. So there was a man called Peter who wanted to marry Dalloway, and suddenly Mrs. Dalloway is making preparation for a party pay. Evening ro party pay prepare korchu. She comes in contact with Peter, and Virginia Woolf in this particular novel, Mrs. Dalloway, she is using the perspective of multiple point of view. Vivina characters, Septimus point of view, Peter point of view, Dalloway point of view, so constantly shift kari jauchi. A technique taku use korchandi Virginia Woolf in Mrs. Dalloway. And Sati, Shakespeare a line, fear no more the heat of the sun, nor the furious winter rage. He repeats these lines. Which of the following is a sonnet? The Unknown Citizen, B. The Hollow Man, C. Red and the Swan, D. Mending Wall. This is by Austen. This is not a sonnet. This is Hollow Man by T.S. Eliot, not a sonnet. Mending Wall by Robert Frost, it is also not a sonnet. It is Red and the Swan by W.B. Yeats is a sonnet. Red and the Swan. Which of the following is a literary ballad? A. Wordsworth's Daffodils, B. Coleridge's Rime of the Ancient Mariner, C. Lord Byron's Sea Walks in Beauty, C. D. Shelley's To a Skylark. Later. It's a literary ballad. Ballad kaun? The ballad is a folk song. Literary ballad is an imitation of a folk ballad, folk song. So Coleridge's Rime of the Ancient Mariner, option B is the right answer. A poem expressing sorrow, lamentation, especially for one who is dead, is a sonnet, B. Ballad, C. Ode, D. Elegy. So expressing sorrow, lamentation is an elegy. Forms of literature, a question. So definition you can write easily. Option D is elegy. Okay, now next. What did Sophocles add to Greek tragedy? A. A chorus, B. A second character, C. A third character, D. A female performer. Let me see this.
Next, Sonali Muduli, a second character, yes. How kiye? A female performer. How answer कौन answer देखिए? Let me see. अब आंसर आसुनी नहीं गूगल पाइबनी ताकू कारण जो आंसर की आसी से भूल अच्छे आंसर रे Sophocles contribution to Greek tragedy is the third character. Option C is the third character. Third character माने कौन? Hero, heroine, villain. तीनटा character है लेकिन tension आसीबो. गोटे plot, गोटे beginning और middle end, गोटे cinema टे आरंभ रु शेष केमती जीवो? Hero, heroine, गोटे villain आसिला. So again hero, heroine भितर misunderstanding हैला. So Sophocles introduced the third character. That is his greatest contribution to Greek tragedy. Not a second character. Second character is the wrong answer. The third character is the right answer. Third actor is the right answer. A literary device used in plays and novels to introduce light entertainment between two tragic scenes is known as A. Comic relief, B. Catharsis, C. Dark humor, D. Black comedy. हिंदी फिल्म रे गोटे टेंस सिचुएशन को डिफ्यूज करा पे कौन हुए कॉमिक सीन आसे और गीतटे सेमती सेतेबेले इट इज कॉल्ड कॉमिक रिलीफ तो ट्रेजेडी रे मोस्टली यूज हुए कारण लोक मैंने 3 घंटा से ट्रेजिक जिनस देखि देखि मुंडाटा जाम हो जाए तेणु तांको टिके रिलीज मिलवा दरकार तो सेटा होची कॉमिक रिलीफ In which of the following Shakespearean comedies cross-dressing has been used? Cross-dressing माने double role जोटा है माने same man है तो same woman है तो so it's a famous Viola dresses up like a boy and becomes a associate of Duke Orsino. This is 12th Night. Which of the following is the first revenge tragedy in English literature? The Duchess of Malfi, B. Hamlet, C. The Jew of Malta, D. The Spanish tragedy. First revenge tragedy. Anka Vitru. Cross-dressing 12th Night Viola both is a woman, but she dresses up like a boy. आ शेक्सपियरियन टाइम रे एटा एथि पे होतला जे झियो मानकर लेडी माने विमेन कैरेक्टर नथिले रोल कर नथिले तो छोट छोट पिला जार निशादारी उठिनी तो सेई मानु को से माने कोन करतला विमेन कैरेक्टर लखुतले तो बेसी समय रखि परिबेनी तो ताकू संगे संग डबल रोल कर देकरी ताकू जेंति ही इज अ बॉय सो ही ड्रेसेस अप लाइक अ बॉय. The Spanish, so it is Thomas Keats, this is Duchess of Malfi, this is Webster, John Webster. Hamlet is Shakespeare, Jew of Malta is Christopher Marlowe. So this is the Spanish, Thomas Keats, the Spanish tragedy. And Thomas Keats Huchindi is university is considered to be a university wit. Kintu Thomas Keats का कौन सा record नहीं that he was studied either in Oxford University or in Cambridge University. He was not there. But he is regarded as one of the university. So Thomas Keats' Spanish tragedy is the first revenge tragedy in English literature. Who popularized comedy of humours in England? A. Ben Jonson, B. George Chapman, C. Thomas Middleton, D. Philip Massinger.
Ruffian. Go pila aji 50 ta jemtale sariba. Who popularized comedy of humors? Again mu Ben Jonson padela bale pura chatta jeng humor padhich. Blood, flame, bile, yellow bile, black bile. The 4 fluids in the human body. So it is Ben Jonson who popularized comedy of humors. So Ben Jonson was a contemporary of Shakespeare. Kintu Ben Jonson classical model ko follow kale. And he was more concerned about the life, the cheats, the rogues, the cheats, the lecherous characters of London city. So in his plays, Volpone, the Alchemist, every man in his humor, every man out of his humor. So it is Ben Jonson. Who is the author of the first English comedy Ralph Roister Doister? A. Thomas Sackville, B. Nicholas Woodall, C. Thomas Norton, D. Robert Greene. It is option B, Nicholas Woodall. He is the author of the first English comedy Ralph Roister Doister. Who pioneered the drama of ideas in English literature? A. J.B. Priestley, B. Terence Rattigan, C. George Bernard Shaw, D. Carol Churchill. Drama of ideas ke kale, which is called otherwise called problem plays and all, depicting the problems in the society. Drama of ideas. Drama of ideas is Bernard Shaw. Mostly wrote about the problem plays. The kind of a, he was Irishman, George Bernard Shaw. And genius sabo. He got his Nobel Prize in Literature, George Bernard Shaw. Who is considered the father of modern realistic drama? A. Henrik Ibsen, B. John Masefield, C. John Drinkwater, D. Somerset Maugham. Father of realism, realistic drama. It is option A, Henrik Ibsen, who portrayed the realistic things, entire realism in the society. How say imagination, say nature, beauty and all these things are not there. So he dealt with the realistic things, the kind of situation people are facing in day-to-day life. He did it in Henrik Ibsen, is the pioneer of realistic drama, is Henrik Ibsen. Which of the following plays is a verse drama? Verse drama means drama in verse or poem, or you can call it as a poetic drama. An Inspector Calls, B. Murder in the Cathedral, C. Arms on the Man, D. Top Girls. Verse drama, poetic play. 20th century किए बहुत गुड़े वर्स ड्रामा लिखते C.S. Eliot, who wrote Murder in the Cathedral, Cocktail Party, Family Reunion, बहुत गुड़े वर्स ड्रामा से लिखते एंड कहीं किसी लिख बेसिकली एनी ड्रामा रे शेक्सपियरियन ड्रामा रे बहुत गुड़े पोएम था. Lots of songs are there in Shakespearean comedies. So he said, so poetry can depict the situation, can study the human emotion, feeling much better than any other form. Sathime se college, let me write poem, drama in poetry. So poetic play hochi Murder in the Cathedral.
जोटी कि टॉमस बेकेट जो टॉमस बेकेट कर श्राइन कैंटरबरी टेल्स रे तांको कैंटरबरी जाउछंती से पिलग्रिम्स माने ता पाउ जे टॉमस बेकेट को टी बिकॉज टॉमस बेकेट was an 11th century. He was a clergyman, Thomas Becket. He was a friend of the king. But the king, so the king wanted to make his friend the Archbishop of Canterbury. So सी जो करियो चेष्टा करछंती टॉमस बेकेट को बेकेट कहले सांग तो एक्चुअली फ्रेंड जहाँ मु कहबी से मो कथा मानिबो बट बेकेट डज नॉट तार गुडे इलीगल काम को बेकेट अपोज्ड सो बेकेट वेंट इन एग्जाइल तापर टॉमस बेकेट कोन के एग्जाइल फेरी छंती फेरला पर से जानि छंती जे किंग विल डेफिनेटली तांसे किंग कहि जे नो आई विल नॉट डू एनीथिंग तो पळे आसे किंतु बेकेट विश्वास करछन जानि छंती जे मु गला माने मते से मार दबो बट बेकेट डिड नॉट केयर फॉर हिज डेथ and Becket is ultimately killed. Becket is killed and Becket becomes a saint, becomes a martyr. So Saita ko deal karchante, he has written the Murder in the Cathedral, T.S. Eliot. Which term is used for Bertolt Brecht's mode of drama writing? A. Theatre of menace, B. kitchen sink theatre, proletarian theatre, D. epic theatre. Just mone rakhibo. Option D of epic theatre or dialectical theatre. ताको Bertolt Brecht लिखछे. Because Bertolt Brecht, what he did, he tried to create an alienation effect. हमने already पढ़ी थी modern drama रे, ताको कहते A effect. ए होचे एलिनेशन इफेक्ट ए इफेक्ट होचे एलिनेशन इफेक्ट माने कोन बे ना जते बडे गोटे स्टेज गोटे कैरेक्टर किछ करू माने व्हाट द प्ले इज गोइंग ऑन यूजुअली कोन हुए ना जते बडे आमे एते इन्वॉल्वड हे से समय भीतर जे जते बडे काहा कोटे टॉर्चर करा जाय से कांदिला हमकु आमे कांदू से हसिला आमे बिकॉज़ आमे आइडेंटिफाई कर दो कैरेक्टर संगे तो तमे तो आइडेंटिफाई करिवो कैरेक्टर संगे तमे से कैरेक्टर को प्रॉपर वे रे एनालाइज कर परिबो Brecht कहले to in order to analyze, in order to find out एकदम impartially in a dispassionate manner to analyze the play, to analyze the character. So audience character संगे identify करिबा कथा नुहे. Then only the audience can easily appreciate, analyze and appreciate the play. He created that A effect. And say jinso as theatre of the absurd asila tapre asila theatre of cruelty so that ekdam character ette mane offbeat character je tama normal audience sange sange re identify kar paribo audience jete identify kar paribo ne character sange re audience sete bele thik way re sound and composed in a very sound and balanced manner audience taku basika analyze kari paribo se play ta then only they can find out what is the message of the play society upar tar impact kon which absurdist playwright has written Rosencrantz and Guildenstern are dead apar kette Hollywood film hechi kette je play hechi ta thikana nai A. Albert Camus, B. Tom Stoppard, C. Sam Shepard, D. Eugene Ionesco. It is Tom Stoppard. Tom Stoppard lectured Rosencrantz because Rosencrantz and Guildenstern they are two characters in Shakespeare's play Hamlet. So takku nekri Tom Stoppard has written this play. The theatre of cruelty was conceptualized by A. Antonin Artaud, B. Harold Pinter, C. John Osborne, D. Martin Esslin. The theatre of the cruelty. No, एगुड़ा खाल सब experimentations no 20th century रे
प्ले गुड़ाक सब आमर जमी केते प्रकार फिल्म इन द 12th फेल गोटे फिल्म आसुची जो फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो जेकोसी गोटे टॉपिक को तुम नहीं करी द डायरेक्टर कैन मेक कैन मेक अ वेरी ग्रिपिंग फिल्म सेमिति सो एक्सपेरिमेंटेशन जोर चलची सेते बेले भी इवन ड्रामा रे स्टेज रे एक्सपेरिमेंटेशन चलथिला तो थिएटर द एब्सर्ड चलथिला तो एमन देखो नहीं सो एंटोनिन आर्टर्ड ही ट्राइड इज अ फ्रेंच so he tried to find out कि मु ताको केमती कर परिबी तो स्टेज रे से बहुत गोटे एबनॉर्मल जिंस देखेले वायलेंस देखेले जोटा कि ताको भल लागिबने एमान को का को ना यार लाइक ऑडियंस को भल लागिबने किंतु ऑडियंस रा देखि करी रिफ्लेक्ट करिवे भाबिबे कि नाही काहे कि एवडा बिकॉज़ दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी एक्सपेरिमेंट करते बट से चललानी सर थिएटर ऑफ क्रुएल्टी चललानी इट वाज अ फ्लॉप द ओनली थिंग से कले शेलिंग करो ही द ओनली प्ले ही इज थिएटर ऑफ द क्रुएल्टी लेस टेंची दैट इज CNCI ऑफ पीबी शेली ताकू नहीं करते सो इट वाज अ फ्लॉप थिएटर ऑफ द क्रुएल्टी वाज अ फ्लॉप Which of the following is a picaresque novel? A. The Adventure of Huckleberry Finn. B. To the Lighthouse. C. Sound and the Fury. D. Farewell to Arms. The Theatre of the Cruelty was a failure. Normally कौन है ना विभिन्न प्रकार एक्सपेरिमेंटेशन चले किछि एक्सपेरिमेंटेशन सक्सेसफुल हुए किछि एक्सपेरिमेंट्स गुड़ाक फेल मारे picaresque novel I have already explained to you picaresque novel Henry Fielding का Tom Jones picaresque novel सब बेले जानथिबो जो कैरेक्टर ता थिबो से कैरेक्टर गोटे रोग थिबो गोटे रोग माने वैगबॉन्ड तार किछि नथिबो आउ से तार एडवेंचर ता देखौथिबो अब पिकारेस्क प्राय बिल्डिंग्स रोमान भलिया तो आंको इस चारटा जाक प्ले भितर टू द लाइट हाउस वर्जिनिया वुल्फ इट इज नॉट अबाउट दैट तांकर सब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मल्टीपल पर्सपेक्टिव साउंड एंड फ्यूरी विलियम फॉकनर फेयरवेल टू आर्म्स होची अर्नेस्ट हेमिंग्वे सो इट इज द एडवेंचरस हकलबेरी फिन हक और जिम मिसिसिपी नई रे जो जाउछंती so how they face what are the situation the problems they face hawk और जिम Mark Twain का The Adventure of Huckleberry Finn. This is a picaresque novel. It's an American novel. It's a picaresque novel. Which is considered the first work of Gothic fiction? A. Invisible Man. B. The Mysteries of Udolpho. C. The Castle of Otranto. D. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. First, Gothic novel. Gothic माने कौन ए गोटे अबंडन घर थिबो कैसल टे थिबो पैलेस टे थिबो भंगा थिबो जेतर तापरे तमे पाइबो गोटे भूत शब्द होतबो तापरे तार डोर्स खोलला बेले के का शब्द होतबो एटा सब हॉरर मूवी हॉरर नॉवेल गॉथिक नॉवेल से भलिया व्हिच इज द फर्स्ट गॉथिक नॉवेल गॉथिक फिक्शन H.G. Wells का Invisible Man, certainly not. Go The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, no. R.L. Stevenson का it is The Castle of Otranto. The Castle of Otranto by Horace Walpole. This is The Castle of Otranto by Horace Walpole is considered to be the first Gothic novel. Which of the following belongs to science fiction genre? A. देखो while discussing the novels in those questions I am also referring to the content. Go Which of the following belongs to science fiction genre?
Hounds of Baskervilles, B. Frankenstein, C. To Kill a Mockingbird, D. The Catcher in the Rye. Castle of Otranto hoche ar Horace Walpole. Eita ko. Who is the writer of Frankenstein? Hounds of Baskervilles hoji Arthur Conan Doyle. Tar pioneer hero hochanti, most immortal, I would say, character is Sherlock Holmes. To Kill a Mockingbird hochi Harper Lee Kara. Talks about racism, slavery. Catcher in the Rye hochi J.D. Salinger. The Catcher in the Rye, the American. It is Mary Shelley. Shelley kar wife, Mary Shelley kar Frankenstein. Frankenstein is a utopian novel. Which of the following detectives appear in Agatha Christie's detective novels? A. Sherlock Holmes, C. B. Father Brown, C. Frankenstein, D. The Catcher in the Rye. Is tankar hoche Agatha Christie nahi answer ta bhul bhal typing hechi Hercule Poirot. Agatha Christie kar hoche jemti Arthur Conan Doyle kar Sherlock Holmes tankar hela Agatha Christie kar hela Hercule Poirot. Which of the following is a travel narrative? A Passage to England, A. A Passage to England, B. The Travels of Dean Mohammed, C. A Passage to India, D. Around the World in 80 Days. Wo pilai? Okay, now next was some technical problem. There was some technical problem. Okay, now next question.
Question number 45. Which of the following is a travel narrative? A narrative that is based on a travel. A passage to England, B the travels of Dean Mohammed, C a passage to India, D around the world in 80 days. Travel narrative. Passage to England are Neeraj C. Chaudhary lechanti. When at the age of 55 or 54 he went to England and he records his impression on that country. A passage to India to E.M. Foster. Around the world in 80 days, it was school pilankar thila. Jules Verne got a French writer thile, novelist. This is Jules Verne. The character hochi. The character hochi Phileas Fogg. ମୁଁ ଜାଣିଛି କ୍ଲାସ୍ 3 କ୍ଲାସ୍ 4 ରେ ICSE ସ୍କୁଲ ରେ था ICSE ସ୍କୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଥିଲା around the world in 80 days. So the right answer is the travels of Dean Mohammed. Dean Mohammed, he writes about his travel narrative. Option B is the right answer. Now ये जो question टा हमर अछि, which of the following detectives by mistake एटा नै लेखा अछि अगता क्रिस्टी कर हला The right answer is, this is the character Hercule Poirot in Agatha Christie. He was a Belgian detective. India रे जदि सबटो maximum बिक्री हुए कहार बिक्री हुए से Agatha Christie novels. Maximum बिक्री Agatha Christie. ता परे Harry Potter बिक्री James J.K. Rowling. The Harry Potter series. Now, in his theory of mimesis, Plato says that all art is mimetic by nature. Art is an imitation of life. To argue his point, he gives the example of A cloud, B tree, C chair, D river. That is Plato's theory of mimesis. Plato तांका theory of mimesis रे कौन कहते? Mimesis is imitation. Tell me. Go पिले. चेयरटा देला से प्लेटो ताको कौन कहचंती? Art is thrice removed from reality. तामने प्लेटो कहचंती तांका theory of mimesis रे तो बुझाती की जे आमे गोटे चेयर देखिले आइडियल वर्ल्ड हला गॉड भगवान नेचर तैयारी करछंती व्हिच इज एन इमिटेशन ऑफ दैट आइडियल वर्ल्ड ताकू देखिकरी आर्टिस्ट कौन कला ना ये तार इमेजिन करिकरी ड्रॉ कला तेणु ओरिजिनल रियलिटी टू से ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी सेठी से देले एग्जांपल ऑफ द चेयर the concept of chair केमिति आसिला how it came सेटा होची प्लेटो को theory of mimesis सेति पे से कहले what is poetry बा poets ना poet गुडे imagine करी करी गुडे जिंस लेखंती so imagination ए सब जिंस has no place in an ideal society of Plato ये जो लोकों को भीतर इमोशनल जिंस लेखि कि लोकों को भड़केइबे से गुडा का आइडियल सोसाइटी तांकर जगह नाही कहना सेमानकर लेखाटा होची पोएट कौन करबना से चेयर ऊपर गोटे लेखिबो ता माने कोन हला से रियलिटी टू दूरे जाउछंती आ एई भलिया लोक माने होचंती सोसाइटी पे गोटे थ्रेट सोसाइटी पे से माने हला असुविधा तेनु दैट इज व्हाई प्लेटो वांटेड टू बैनिश द पोएट्स फ्रॉम हिज रिपब्लिक कारण से माने तांकर रियलिटी संगे कनेक्शन नाही
They are removed from far away from reality. So option D. C is the right answer, chair. Next. Aristotle defines tragedy as an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. Aristotle tragedy would define. So what are the features of tragedy? Spectacle, all these things are plot. And Aristotle said, what is the soul of the tragedy? Plot is the soul of a tragedy. Without a plot, tragedy hai paribo nahi. So Aristotle jo kahile jo what is a tragedy? Tragedy is an imitation of an action that is serious. Setabale Greek tragedy or comedy tankar drama hala kon either should be pure tragedy or should be pure comedy. Tragedy comedy misa nahi jota ki Shakespeare combined both tragedy and comedy. So Aristotle say in language embellished with each kind of artistic ornament माने जेमती गोटे serious जिनस को जेमती treatment करा जिवो जो language दरकार. So tragedy should use that kind of a language. There are several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear, effecting dash. Fill in the blank with the correct expression from the following. A. The gratification of these emotions by the proper purgation. B. Of these emotions. This is option B. Purgation of these emotions. C. The appeal to pleasurable emotions. D. The arousal of sorrowful feeling. Right answer कोटा. Google खोजिया को बहुत समय लागुना एते गुडे जिंस लेखिया पड़िबो नै जोड़ी तो जिंस जानि छ थ्रू पिटी एंड फियर. पिटी एंड फियर माने को गोटे वर्ड अछि जोटे कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर अछि ता कोनती कैथारसिस. एरिस्टोटल को पढ़िला बेले हाउ व्हाट आर द टर्म्स यू कम अक्रॉस गोटा हला हेमर्सिया आ गोटा हला कैथारसिस आ गोटा हला एनाग्नोरेसिस. हेमर्सिया हला ट्रेजिक फ्लॉ गोटे कैरेक्टर बा गोटे प्रोटैगनिस्ट कोथि पई तार फॉल्ट हुए से काहे के लाइफ रे कष्ट हुए करे पाए सेटा सफरिंग ता काहे की हुए ना से ता लाइफ रे गोटे मेजर फ्लॉ मेजर ब्लंडर गोटे करे मिस्टेक टे करे मान जंती गोटे पिलाटे पाठ न पड़ी भलो ब्रिलियंट थिबो बहुत ब्रेन थिबो मेमोरी पावर थिबो पाठ पढ़नी बाना बात्रा हेगला तो सी जतले बसी पान दुकान ठिया हितो बा नई कूल रे बसथिबो सेतले से भाबुथबो जे भगवान मते केते जिंस देइथिले मु कुआडे उठी थांती मो सांग माने कुआडे गले मु कोठी पड़ीछि बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी. इट इज द ट्रेजिक फ्लॉ. तो ताकू कहंती ताकू एरिस्टोटल ना दे कहिसंती हेमर्सिया which is tragic flaw. फ्लॉ माने तुम कैरेक्टर जो मिस्टेक तुम लाइफ रे करछ हमें समस्त लाइफ मिस्टेक कर मेजर गोटे गोटे मिस्टेक जीवन टा पूरा एपट सपट कर दबो. सेकंड होची कोन आउट क्वेश्चन से ट्रेजेडी तो जो इमोशन टा को से क्रिएट करांती इट कोन करंती इट्स अ पर्गेशन ऑफ पिटी एंड फियर ता कोनती कैथारसिस. कैथारसिस ता कोन इट इज पिटी एंड अराउजिंग पिटी एंड फियर. ऑडियंस मन रे जेते से देखुथिबो गोटे स्टोरीटा बा गोटे प्ले देखुथिबो तार गोटे पिटी आसीबो कहा प्रति आसीबो से कैरेक्टर प्रति दया आसीबो जे हा से लोकटा काहे कि एति कि छोटे जिंस पे जीवन रे केते सफर करूची. सेकंड हला फियर. फियर ता कोन जे तम भीतर डर आसे
जे काले मते से जिनस मो केस रे भी हबार चांसेस अछि यदि मु एमती करबी अगेन आई विल आल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम द सेम फेट एज द कैरेक्टर इज फेसिंग तेणु से डरटा भी रहे जमती तुम जो देख गोटे लोक बहुत मीठा खाई मरी जाइए तुम भितर दया आस प्लस डरटे आसो मु तो बेस मीठा खाऊँ काले मो भी से अवस्था हम तेणु यहाँ फियर गोटे आसे मन में Aristotle said catharsis is pity and fear affecting pity and fear arouse करी कौन हम ना पर्ज करिवो क्लींस करिवो purgation of these emotions से इमोशन को पर्ज हो जिवो तेणु तमे से हॉल रु स्टेज से थिएटर रु बाहरला बेलू तमे गोटे एनलाइटेंड लोकटे होके आसीबो माने राइट एंड रॉन्ग एटलिस्ट बुझी पारिबो जे कोठी भूल हैला कोठी ठीक हैला you will know the difference between right and wrong good and evil हो पछे 10 मिनट पे तो एटलिस्ट भल लोकटा हेगला तापर आसी पुणी से गुंडागर्दी करू जो लोकटा Coleridge's statement that imagination dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate relates to A. Primary imagination, B. Secondary imagination, C. Fancy, D. Sensory perception. Coleridge, in his Biographia Literaria, what a critical work. What has he written about? Tinta jinso se lection. He writes about fancy, he writes about primary imagination, and he writes about secondary imagination. So, कोटा पोएट पे दरकार आम समस्त प्राइमरी इमेजिनेशन अच्छे आम जोटा को देखिलु जो साइट बा आम गोटे गार्डन को गलु देखापी गोटे रिजॉर्ट को गलु बढ़िया सुंदर फूल फूल सब देखिलु आमको वी आर इम्प्रेस्ड इट अपील्स टू आवर सेंसेस तेणु आम से माइंड रहीगला किंतु आम भीतर जे पोएट थी कविटे थी से गोटे पोएम लिखिपर कि आम लिखिपर कहीं ना जी वन हु इज अ पोएट who has a creative imagination who has a creative faculty जे माने भाभी पारिबो लेखि पारिबो सेही लोकटी होची पोएट तो सेही पोएट कोन हुए ना सेही सीन टा इट विल डिसॉल्व तार इमेजिनेशन है डिफ्यूज करिकरी तापर कोन करिवो ना से ताको रिक्रिएट करिवो से सिचुएशन कारण सेठी देखिकरी सेठी लेखनी केही आसु कवि नुहंती जे सेठी देखला सेठी लेखिला that is not done अन्नु मलिक जमती से जो इंडियन आइडल बसिक धड़ धड़ बसिक करे तो एमती माने सस्ता जो थर्ड ग्रेडेड पोएम is not written like that good poetry is written you see something तापर तमे सिमिलर सिचुएशन जब लाइफ आसीबो you connect it तापर तमे सेही सिचुएशन को अगेन माइंड रे रिक्रिएट करिवो आ तार बेस्ट एग्जांपल हैला सब पिला +2 रे डैफोडिल्स पोएम गोटे अच्छी विलियम वर्ड्सवर्थ कर डैफोडिल्स पोएम तो डैफोडिल्स पोएम रे तुम जानिबो जे सेकेंडरी इमेजिनेशन कौन काम करे so this is Coleridge says this is what is called secondary imagination primary imagination रे जिंस गुडा को तुम माइंड रे फिक्स हेकी रहिला तापर secondary imagination कौन करिवो ना which only poets possess, creative writers possess. So, से मानक में सही जिंस को recreate करिकरी they either write a novel or a poem or a play or a movie. They make a movie. That is called secondary imagination. Next, who views poetry as the breadth and finer spirit of all knowledge? A. Coleridge, B. William Wordsworth, C. P.B. Shelley, D. Lord Byron.
That Wordsworth, William Wordsworth, the answer is option B, William Wordsworth. William Wordsworth in his preface to when he defines what a poetry is, what is poetic diction, what should be the language of poetry, what is the difference between language of prose and language of poetry. So, Saint is lecture the famous line, poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling, and then it is recollected in tranquility. Tapar se lecture, it is the breadth and finer spirit of all knowledge. This is by William Wordsworth. Who was Matthew Arnold influenced by for his touchstone method of critical evaluation? A. Longinus, B. Horace, C. Plato, D. Aristotle. Because Matthew Arnold is considered to be our study of poetry. A touchstone method he has dealt with in study of poetry. Touchstone कौन आम जमी कसटी पत्थर अच्छी तमें ताकू देखिले जानी पारिबाटा एटा सुना कि नुहे touchstone होची सेया. So Matthew Arnold uses the comparison method. माने गोटे पोएम को केते गोटे क्लासिक एग्जांपल्स दियंती पोएट्री. तो जेकोनस लोग गोटे पोएम टा लिखला ताकू से कंपेयर करबे ता संगे रे. यस एई पोएम टा एई कविता टा जहा लेखा आइची सेटा केते दूर ता संगे रे आप खाउची ना नाही. सेई बेसिस से कह लिखिले जे व्हिच इज अ गुड पोएम व्हिच इज अ मेडियोकर पोएम. सेति पई टीएस इलियट सेज जे मैथ्यू आर्नल्ड जो कंट्रास्ट जो सिस्टम टचस्टोन मेथड करछंती he is almost a modern critic. He is a new critic. He is the father of new criticism कहले चलिबो. Because they objectively कोनोसी निज इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू रु करनाती ऑब्जेक्टिवली से धरछंती जे एटा गोटे टचस्टोन मेथड that I have taken suppose 20 great poems. तापर जो poets माने लिखछंती so he tries to compare with those great poems. Touchstone method. से से डिटरमिन करिवे जे पोएम टा जोडे लेखा हला जेमते आमे गोटे फिल्म टे जो आमे देखुचे सपोज शोले आमे देखिले शोले टा इज अ ग्रेट मूवी तो ता पर जते फिल्म आसला एटा से कुछ कंपेयर करा गला ए शोले भले ना नुहे तो सेमती so that is in study of poetry Matthew Arnold से टचस्टोन मेथड को इंट्रोड्यूस करले in study of poetry. So, ये जो touchstone पे he was influenced by whom? It is option A. He was influenced by Longinus. Longinus का theory of sublime. So, Longinus का जो sublime theory पर है Matthew Arnold was influenced. He was looking at सेथिपाई Matthew Arnold said that Chaucer is a great poet, but Chaucer का जो sublimity of seriousness था he lacked in high seriousness. Because he lacked in high seriousness, that is why Chaucer को से classics का भीतर नेले नहीं. He did not consider Chaucer to be a classic poet. He is a good poet, great poet, he said, but ताको classic level को नहीं परिवार because he lacked in high seriousness. Okay. So, the next class, next 50 questions. Remaining 50 questions we will discuss. Now, ये जो 50 questions तमे देखिलो, से जो देखिलो जो पैटर्न ता आसिला, से पैटर्न ता काहाटो आसु कोठो आसुची, सबु जाक क्वेश्चन आसुची जो टेक्स्ट गुडा को प्रेस्क्राइब कराइछि सिलेबस, जो टेक्स्ट प्रेस्क्राइब कराइछि सिलेबस रे सेई टेक्स्ट रो क्वेश्चन आस. तो जो पिला नोट न पढि के टेक्स्ट पढिछि टेक्स्ट पढ़ी नोट करी पिला क्वेश्चन आंसर इजिली दे.
जो पिला बही देखिनी से बहीटा पिंक की व्हाइट की ग्रीन की येलो की ऑरेंज जानी खाली ट्यूशन फास्ट ट्यूशन गला ट्यूशन में जो नोट दिया डाकिदेले से नोट को पढ़ला पढ़ी तो सबू जाक जो ऑटोनोमस कॉलेज कौन उत्कल यूनिवर्सिटी कौन से फिक्स्ड क्वेश्चन आसे जोटा 2021 आसला से 2023 आसीबो सेही क्वेश्चन आसीबो 2025 रे तो पिला प्रति पेपर रे 20-15 टी क्वेश्चन घोष देले सब जाक आंसर क्वेश्चन आसे आ सेही पिला माने ही फेस करछन प्रॉब्लम है बिकॉज यू हैव मेड अ सिलेक्टिव स्टडी किंतु जतले एंट्रेंस दउछ फॉर अ जॉब यू आर फेसिंग ए टफ कंपटीशन सेति सिलेक्टिव स्टडी काम दबो ना सब जाक पढ़िया पड़े तो यू हैव टू स्टडी तमें पढ़ कौन ना सबू जाक मेजर जो शेक्सपियर किंग लियर ओथेलो हैमलेट मैकबेथ जो मेजर डायलॉग्स गुड़ाक अच्छे कोट्स गुड़ाक डायलॉग गुड़ाक ताको मन रखे और एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा आरपटे है 12th नाइट आ गोटे है एज यू लाइक इट एगुड़ा भर्ती कोट्स अच्छी कोटेबल कोट्स अच्छी तो सेमिति ही क्वेश्चन आसीबो फ्रॉम एलिजाबेथ एज नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नल्ड कर स्टडी ऑफ पोएट्री भल पढ़ो टीएस इलियट कर ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट भल पढ़ो अंडरस्टैंड टेक्स्ट गुड़ाक भल पढ़ो टीएस इलियट कर वेस्टलैंड ऊपर एटलिस्ट वेस्टलैंड टा मुझे लिखी 433 लाइन्स तार सब जाक पार्ट्स गुड़ाक खाली से गुड़ाक सब मन देन ओनली यू कैन हैव द कॉन्फिडेंस जहाँ क्वेश्चन आसे आई विल बी एबल टू क्रैक आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट आई विल एबल टू गेट इट राइट आई कैन क्रैक द एंट्रेंस पढ़ा पड़ो एक्सट्रीम इजी क्वेश्चन आसुची माने जेमती येट्स कोट सेकंड कमिंग पढ़ाई सिलेबस रे थिला सेलिंग टू बाइजेंटियम सिलेबस रे थिला व्हेन यू आर ओल्ड अप ऑन पास कोर्स रे थिला जनरल इंग्लिश रे when see everywhere he is writing to Morgan when you become old you'll come to know that how much I loved you so this is it for today's session the next Wednesday today is Wednesday then Friday we'll do the next 50 questions okay पिले तुम जो शुणुच जानूच तुम गोटे लाइक करछ कि डिसलाइक करछ जहाँ भी करछ किसी रिएक्शन नदेले केमती हम कहला आई एम ऑल्सो मेकिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट it's always becoming a one way process suppose that question ta साइंस साइंस मो गूगल देखला आंसर टा लिखला सेटा कि मो गूगल देखि आंसर ले कुओ कि ताको मन रख okay so thank you all